very warm morning to one and all present here. This is Abhilasha from Leal Public School, and today we all are going to continue our chapter number 7 from your civics textbook. And the name of the chapter is Understanding Marginalization. Till now, we have discussed about Adivasis and marginalization. What is the relationship between Adivasis and marginalization, and how they feel so unimportant in this society? Okay, so first of all, what do you mean by the term minority? What is minority? Who will tell me what is minority? What do you mean by the term minority? You can give examples also. Yes, Ayush Parekh, please unmute your device. Good morning, ma'am. Good morning, Ayush. Yes, beta. Yes, ma'am. Minority is a group which is relevantly in less quantity than in another group. Yes, but the terms which you used here is not appropriate. Less quantity or sorry, ma'am. Small group. Population. Yes, population is very small, very less. Yes, very good. And yes, Jayantika, will you please give me the example of minority communities in India? Yes, Jayantika. What happened, Jayantika? Unmute your device, beta. Okay. So a minority refers to small groups within a society or the country that are different because of race, religion, language, and their population is like very less. Okay, those communities are termed as minorities. In India, we have several minority communities. For example, Muslims, Jains, Sikhs, Buddhist, so many minority communities are there. Okay, minority, they are the small groups within a society or the country that are different because of race, religion, language, etc. And their population is very less. Okay, so in Unit 1, you read that the Constitution provides safeguards to religious and linguistic minorities as part of our fundamental rights. We have like this right. We have this fundamental right. Will you please tell me the name of that fundamental rights, which is basically for minority community in India? Yes, Ayush. Yes, ma'am. According to me, the answer to this question would be that the right to minority communities to set up their own educational institutions. Yes, I wanted to know the name of that fundamental right. Right to educational institutions, ma'am. Educational and cultural rights. Educational and cultural. Are you sure educational or cultural rights here? Yes, ma'am. Because, ma'am, when minority communities set up their own educational institution, it no. The name of that fundamental right, the concept, your concept is right, but the name which is present in our which is present in our constitution, the proper name. Sorry, ma'am, but I can't. I'm not sure about that name. Okay, not an issue. Harshvardhan. Good afternoon, ma'am. Yes, good afternoon. And first name is right to equality. Right to no. I am asking you about that particular right. That particular right which is for minority community. Okay. Sorry, ma'am. I don't know. Part. Yes, ma'am. The name of the right is cultural and educational right. Yes. I want to ask that
I want to ask मैम right to religion भी मैम हो सकता है? यस हो सकता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यस हो सकता है, बट दिस कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट इज बेसिकली फॉर देम, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस राइट दे कैन मेंटेन देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, दे कैन प्रिजर्व देयर लैंग्वेज, दे कैन प्रिजर्व देयर कल्चर according to this fundamental right. ठीक है, this is basically for this minority community. Okay, बाकी जितने राइट्स है ऑब्वियसली वो सारे राइट्स माइनॉरिटीज के लिए भी है, ऐसा नहीं है कि खाली माइनॉरिटीज के लिए वही राइट है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। Okay, so cultural and educational rights. So why do you think these minority groups have been provided these safeguards? Now the question arises, a whole fundamental right for that particular, like this particular minority groups, why? क्यों इतना सेफगार्ड, इतना प्रोटेक्शन किस लिए? The term minority is most commonly used to refer to communities that are numerically small in relation to the rest of the population. ठीक है, न्यूमेरिकली जो है काफी दूसरी जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें उनका जो पॉपुलेशन है, उनका जो नंबर है काफी कम है. However, it is a concept that goes well beyond numbers. It encompasses issues of power, access to resources, and has social and cultural dimensions. As you read in Unit 1, the Indian Constitution recognized that the culture of the majority influenced the way in which society and government might express themselves. So, कॉन्स्टिट्यूशन में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो मेजॉरिटी अगर उनके लिए कोई एक पर्टिकुलर अगर ये फंडामेंटल राइट नहीं होगा तो मेजॉरिटी कम्युनिटी क्या करेगी, उन्हें उसे डोमिनेट करने की कोशिश करेगी, उनका काफी इन्फ्लुएंस होगा, और गवर्नमेंट भी जो है मतलब कि मे भी ऐसा हो सकता है सोसाइटी और गवर्नमेंट उन्हें डोमिनेट करे, ठीक है। So in such cases size can be a disadvantage and lead to a marginalization of the relatively smaller communities. और इस वजह से क्या होता है, उनकी पॉपुलेशन इतनी कम होती है तो हो सकता है उनमें से कोई गवर्नमेंट ना बन सके, ठीक है, उनकी कोई गवर्नमेंट ना बने, उनकी पॉपुलेशन इतनी कम है तो उनका साइज इतना कम है, तो एक एज अ डिसएडवांटेज भी वो कभी कभी क्या हो जाता है, वर्क करने लग जाता है। एंड ऑब्वियसली अगर ये डिसएडवांटेज होगा, उनको प्रॉपर राइट्स नहीं मिलेंगे, उनको इक्वालिटी नहीं मिलेगी, तो ये क्या है, मार्जिनलाइजेशन ही है, ठीक है। जो स्मॉलर कम्युनिटीज हैं वो मार्जिनलाइज फील करेंगी। Thus safeguards are needed to protect minority communities against the possibility of being culturally dominated by the majority, जिससे कि through this right, through this fundamental rights of cultural and educational rights, they can maintain, they can preserve their culture, their language, their religion, they can set up their institution, जिससे कि उनका culture, उनका language preserve रहे, मेंटेन रहे, ठीक है, जिससे कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसको डोमिनेट ना करे, कल्चरली कोई भी डोमिनेशन ना हो, नहीं होना चाहिए। They also protect them against any discrimination and disadvantage that they may face. Given certain conditions, communities that are small in numbers relative to the rest of the society may feel insecure about their lives, assets and well-being. Obviously, कुछ communities जो है जिनकी population बहुत कम है, हो सकता है वो society में बहुत insecure feel करें, उनकी life जैसी उनकी life है वो life उनकी life वैसे ना चल सके, उनकी assets हो गई, उनकी well-being हो गई, उनका culture हो गया, वो उसमें security feel ना करें। This sense of insecurity may get accentuated if the relations between the minority and majority communities are fraught. Now, this sense of insecurity, ये जो insecurity है, इस वजह से क्या हो सकता है, इस वजह से हो सकता है कि उनके जो relations हैं वो क्या हो सके कि मतलब कि हम बोलते हैं ना कि important, like insecurity may get accentuated if the relations between the minority and majority communities are got fraught, कि अगर हमने उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया तो हो सकता है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटीज के बीच में जो है एक उनके जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाएं, ठीक है, और उसमें बहुत ज्यादा मतलब अनप्लेजेंटनेस आ जाए, ठीक है, उस चीज के लिए बोला गया है
तो इस इनसिक्योरिटी से हो सकता है उनके रिलेशंस जो हैं वो खराब हो सके। The Constitution provides these safeguards because it is committed to protecting India's cultural diversity and promoting equality as well as justice. We already talked about it कि हमारे Constitution में ये clearly mention किया हुआ है कि हमें अब इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करके रखना है, हमें इक्वालिटी को प्रमोट करना है और हमें जस्टिस भी देना है। So we already talked about it in chapter number 5 of your civics textbook, the name the judiciary. The judiciary plays a crucial role in upholding the law and enforcing fundamental rights. Judiciary, one of the important organ of the government, it plays a very important, very significant role in upholding the law, how laws are making, how if laws are making, they are relevant or not, or all those laws are according to the fundamental rights or constitution or not. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है जुडिशरी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। Every citizens of India can approach the courts if they believe their fundamental rights have been violated. We already discussed all these things. Ki if someone is having that feeling, my fundamental right got violated, somebody hurt my religious sentiments, or and due to that my fundamental right got violated, then that person can approach to the court. That person can move to the court. So now let us understand marginalization in the context of Muslim communities with one example. With the Muslim community, one of the minority community in India, उसके through हम marginalization को समझेंगे। According to 2011 census, who will tell me what is the meaning of census? What is the meaning of census? So census, the official counting of the population, including their jobs, including their ages, including the male-female ratio, that is known as having the information of having these types of information is known as census. So according to 2011 census, Muslims are 14.2% of India's population and are considered to be marginalized community in India today. Because in comparison to other communities, they have over the years been deprived of the benefits of socio-economic developments. अब देखिए, according to 2011 census, the population of Muslim communities in India are 14.2%, and they are considered to be one of the marginalized community. Why they are considered it as a marginalized community? Because as compared to other communities, they have been deprived of the benefits of socio-economic development in the terms of education, in the terms of job opportunities. तो इन सारी चीजों से वो जो है deprived रहे हैं, वो suffer कर रहे हैं. They are like lacking these benefits. They are not getting all these benefits. Okay, so the data in the three tables below derived from different sources indicate the situation of the Muslim community with regard to basic amenities, literacy and public employment. अब जो तीन tables हैं अलग-अलग sources से लिया गया है, relevant sources है बेटा, ठीक है? आपको अगर और further information जाननी है तो नीचे sources दिए हुए, आप go through कर सकते हैं उन sources से और भी information collect कर सकते हैं, ठीक है? तो अब जो थ्री टेबल्स हैं वो क्या इंडिकेट कर रही है कि उनकी बेसिक एमिनिटीज, जो बेसिक नेसेसिटीज है, एमिनिटीज मींस बेसिक नेसेसिटीज के रिगार्डिंग है, लिटरेसी के रिगार्डिंग है कि उनका एजुकेशन रेशियो कैसा है, उनको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कितनी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, ये सारी चीजें. ओके, सो नाउ एक्सेस टू बेसिक एमिनिटीज अकॉर्डिंग टू 2008 एंड 2009, रिलीजियस कम्युनिटीज हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड सिख, इनमें कंपैरिजन है. सो बेसिक एमिनिटीज में पक्का हाउस, इलेक्ट्रिसिटी एंड टैप वाटर का है. हिंदू कम्युनिटीज मतलब 65.4 जो है आपके हिंदू कम्युनिटीज के हैं. इलेक्ट्रिसिटी 75.2% हिंदू कम्युनिटीज को मिल रही है और टैप वाटर 43.7% को मिल रही है. मुस्लिम्स 63.8, इलेक्ट्रिसिटी 67.8, टैप वाटर 35.8. क्रिश्चियन 69.3, इलेक्ट्रिसिटी 86.2 एंड टैप वाटर 48.0.
सिख 91.3, इलेक्ट्रिसिटी 96% और टैप वाटर 49.3। तो अब इनमें इस डेटा को देखते हैं तो इस अकॉर्डिंग टू दिस डेटा Muslim community is the one who is like lacking in the basic amenities. Many like more than like 35% जो पॉपुलेशन है आपकी लैक कर रही है, जिनको बेसिक एमिनिटीज, पक्का हाउस नहीं मिल रहा है, 33% को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रहा है और 65% को आपका टैप वाटर नहीं मिल रहा है। ठीक है, नाउ व्हिच ऑफ दीज कम्युनिटीज हैव द मोस्ट एंड द लीस्ट एक्सेस टू बेसिक एमिनिटीज? Sikh community has the most access to basic amenities, and the Muslim community has the least access to basic amenities. Now next, literacy rate. हिंदूज में मतलब ऑल मतलब सारी कम्युनिटीज को लिया हुआ है, 74% है इन टोटल। हिंदूज में जितनी हिंदू की पॉपुलेशन है उसमें 63% जो है हिंदूज जो है लिटरेट है। मुस्लिम्स में 57, क्रिश्चियन 74, सिख 67, बुद्धिस्ट 71 एंड जैन्स 86। ये ध्यान रखना, ये इनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है परसेंटेज यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इनके जैसे अब जैन की पॉपुलेशन तो आई थिंक 0.2% है, आई थिंक इतनी कम है। और उस 0.2% में सपोज 0.2 में 100% तो 100 में 86 जैन्स जो है वो लिटरेट है। ठीक है, तो ये उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है लिटरेसी रेट गिवन है परसेंटेज में। सो लीस्ट वन कौन है? हाईएस्ट वन जैन्स है और लीस्ट वन कौन है? लीस्ट वन मुस्लिम्स है। Next, public employment of Muslims and according to percentage, population 13.5, IAS कितने बन रहे हैं? 3% IAS है। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन 13.5% है, उसमें से IAS 3% है, IPS 4% है, IFS 1.8% है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट में 3.3% है, स्टेट PSU 10.8 एंड बैंक्स एंड RBI में ओनली 2.2% है। तो ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है मुस्लिम्स का, इनका परसेंटेज देख लीजिए। टोटल पॉपुलेशन IAS में कितने हैं, IPS कितने हैं, IFS कितने हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट में सेंट्रल जो गवर्नमेंट में कितने लोग वर्क कर रहे हैं, ओनली 3.3 है, स्टेट PSU में कौन कौन है और 10.8% है, एंड बैंक्स एंड RBI में 2.2% है। ओके, सो नाउ व्हाई डू recognizing that Muslim in India were lagging behind in terms of various development indicators, the government set up a high-level committee in 2005. Chaired by Justice Rajinder Sachar, the committee examined the social, economic and educational status of the Muslim community in India. So, अब मुस्लिम कम्युनिटीज जो थी काफी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफी लैग कर रही थी। सो गवर्नमेंट ने एक कमिटी जो है और सेटअप की थी, और जिसके हेड कौन थे? जस्टिस राजेंद्र सचर थे, और इसमें मुस्लिम कम्युनिटी की सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस को उनको क्या करना था? एग्जामिन करना था। द रिपोर्ट discusses in detail the marginalization of this community. It suggests that on a range of social, economic and educational indicators, the situation of the Muslim community is comparable to that of other marginalized communities like scheduled castes, scheduled tribes. For example, according to the report, the average years of schooling for Muslim children between the ages of 7 to 16 is much lower than that of other socio-religious communities. ठीक है, अब इस रिपोर्ट ने क्या बताया कि इनकी जो कंडीशन है, जो और शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब जो अदर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, उनके कंपैरिजन उनके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। इनका जो एवरेज स्कूल मुस्लिम चिल्ड्रन की जो स्कूलिंग है वो 7 to 16 ईयर्स तक की में बहुत ही कम है एज कंपेयर टू द अदर सोशियो रिलीजियस कम्युनिटीज। Economic and social marginalization experienced by Muslims has other dimensions as well, और भी dimensions है, और भी दूसरे ways हैं, मतलब और भी दूसरे आपके तरीके हैं जिससे कि उन मुस्लिम्स का जो देखा गया है, और भी दूसरे मेजरमेंट से, like other minorities, Muslim customs and practices are sometimes quite distinct from what is seen as the mainstream. Obviously, जो mainstream है, जो आपकी
मेजॉरिटी में जो पॉपुलेशन है उनके जो रूल्स कस्टम्स और प्रैक्टिसेस है काफी डिफरेंट है. सम नॉट ऑल मुस्लिम्स may wear a burqa, sport a long beard, wear a fez, and these become way to identify all Muslims. सब कुछ सारे सबकी बात नहीं हो रही है. कुछ मुस्लिम्स जो हैं वो बुरका पहनती है, जो औरतें हैं बुरका पहनते हैं. कुछ जो मुस्लिम्स हैं वो लॉन्ग बियर्ड रखते हैं. कुछ फेस पहनते हैं. फेस क्या होता है? जो एक छोटी सी व्हाइट कलर की आपने एक टोपी सी देखी होगी जो मुस्लिम कम्युनिटीज में मुस्लिम्स पहनते हैं, उसको बोलते हैं फेस. कुछ लोग फेस पहनते हैं. तो ऐसे लोगों को क्या कंसिडर किया जाता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? एज अ मुस्लिम आइडेंटिफाई किया जाता है. बिकॉज ऑफ दिस दे टेंड टू बी आइडेंटिफाइड डिफरेंटली एंड सम पीपल थिंक दे आर नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. और कुछ लोगों को लगता है कि वो हमारे जैसे नहीं है, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस. Often this becomes an excuse to treat them unfairly and discriminate against them. और बहुत बार उनको इसी इन कुछ reasons के वजह से क्या है, excuse दे दिया जाता है कि they are very different from us, so that's why they treat them unfairly. कुछ जो लोग हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उनके साथ discrimination करते हैं. So do you remember reading in your class 7 book about the Ansaris were finding it difficult to rent a house? Ansari, Mr. and Mrs. Ansari, they wanted to rent a house, but because of their religion, that landlady didn't gave that house to them just because of their religion. ठीक है. और उन्होंने बहुत ही लॉजिकल सा एक इलॉजिकल सा रीजन दे दिया था कि यहाँ पे वेजिटेरियंस रहते हैं, यहाँ पे नॉनवेज नहीं पकता है. बट मिस्टर और मिसेस अंसारी ने देखा कि पास के घर में मछली भी बन रही थी, तो उन्हें तो कुछ भी नहीं कहा. तो बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन उनको जो है हाउस रेंट पे नहीं दिया था. ठीक है. सो दिस सोशल मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम इन सम इंस्टेंसेस हैज लेड टू देम माइग्रेटिंग फ्रॉम प्लेसेस वेयर दे हैव लिव्ड. बहुत बार ऐसा होता है, वो जहां पे रह रहे थे वहां से उनको जाना पड़ता है. ऑफन लीडिंग टू द ghettoization ऑफ द कम्युनिटी. समटाइम्स दिस prejudice leads to hatred and violence. और इससे कभी-कभी क्या होता है, ऑफन लीडिंग टू द ghettoization. ghetto is the term जो स्लम एरिया होता है ना, उसको बोलते हैं ghettoization. ठीक है. ghettoization जब आप एक अपने टाउन से काफी डिफरेंटली अलग जगह जाके जब एक आप एरिया बना लेते हैं, स्लम एरिया को बोलते हैं ghettoization. ठीक है. a part of a town where many people of the same race, same religion live in poor condition, that condition is known as ghettoization. And sometimes this prejudice leads to hatred and violence. और कभी-कभी hatred और violence की situation भी create करती है.